Prime Minister Narendra Modi reaching out to countrymen to unitedly fight and beat this pandemic. And country rising to the occasion, lending full support to their leader. Since 25th March 2020, country in lockdown mode but fighting with full spirit. Testimony of their commitment given to PM. It is an unprecedented experience for all Indians during this lockdown period due to the COVID-19 pandemic. Almost everyone is going through a rough phase and finding it challenging to deal with the abrupt change in lifestyle. What is going on in everyone's mind is the thought to adopt the change. Maybe the bulk of people seek a disciplined schedule so that they can invest the time in relevant concerns. So people are managing time properly during this stay-at-home span. These ladies, part of an organization called Lady Circle India, wrote inspirational, educative messages and shot this video in their respective homes and edited it to look like they are passing each other these notes. In the video, they wrote messages like stay home, stay safe, wash your hands, smile daily, exercise and so on. Inspirational, isn't it? Maybe you can also try it with your friends. When you are presented with the opportunity to stay at home 24/7, you can make it enjoyable with family members around you. People are trying to involve themselves as much as they can with family discussions. Focusing on spreading laughter and taking the same in turn. People are playing online games and spending their time. So E. Okay, so I love old songs. So इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से है मांझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय. Online Antakshari or playing tambola sitting at their places itself is a big hit in this lockdown. जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह न ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी भर न ले, हो मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो. चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो. Little changes in everyday routine can lead to long-lasting effects. During this lockdown, you can inculcate small habits at home for a healthier life. Flexibility to set your own routine while working from home can be exciting, but it is still important to establish a schedule that includes eating regular meals to be productive and promote your overall health. Good luck, Corona Warrior! You too, Corona Warriors, stay back at home. मैं हूँ कोरोना वॉरियर.
क्योंकि मैं किसी को घर के बाहर नहीं जाने देती। मैं अपने हाथ दिन में कई बार 20 सेकंड के लिए धोता हूँ। Taking care of your health in this period is also very essential. Many doctors are giving advice to people online to be free from stress. हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम सबके लिए। मेरी ड्यूटी मुझे सिखाती है मानव की सेवा। केवल एक विनती है कि आप घर पे रहें। And we're gonna fight this pandemic till we succeed. आजकल कोरोना है और लॉकडाउन है, सभी लोग बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन आजकल मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, सिंथेसाइज़र यूज़ करता हूँ और ब्लॉग्स लिख रहा हूँ लोगों की अवेयरनेस के लिए। हमारे देश के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि घर पे ही रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। जिसको कोरोना वायरस हो जाता है उसको सिर्फ एक चीज़ बचाती है, उसकी इम्यूनिटी, उसकी रेजिस्टेंस। इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका क्या है? आप हेल्दी खाइए, अपना मैक्रोज और माइक्रोज प्रॉपर लीजिए अपने खाने में, फिजिकली एक्टिव रहिए और नशे से बचिए, सिगरेट से बचिए। हम लोग एवरीडे एक नई डिश बनाते हैं, हर एक का कोई टर्न ले रहा है खाना बनाने के लिए। और सबसे महत्व की चीज़ ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि घर से बाहर निकलिएगा मत, तो वो हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट का पालन कर रहे हैं उनकी, क्योंकि इट्स अ वेरी डेडली डिजीज़, सो इससे बचकर रहना चाहिए। वी हैव टू टेक ऑल द पॉसिबल प्रिकॉशंस। वो एक सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू अवॉइड साइको बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन पीरियड। आज के टाइम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई है और जब तक ये पीरियड ओवर होगा तब तक कई सारे लोग इससे अफेक्टेड हो जाएंगे। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो ये मेजर इश्यूज क्रिएट होगा, जो कोरोना से भी खतरनाक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा कर्म है वो आपको घर में बैठ के रहना, ये आपका सबसे बड़ा कर्म है। चाहे आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, मैटर नहीं करता है। Yoga and exercise in the course of this lockdown, try to keep yourself as much as fit as possible. An hour of exercise and yoga every day in the morning improves your immunity and make your body less susceptible to the coronavirus. Not only the elders but children are also performing yoga to keep themselves busy and fit. Yoga Guru Sumit Sapru of Yog Sattva, Delhi is teaching some basic yogasan for relief in pains and aches from his home studio. Helping him archive this feat is his mother. What a kind, noble and helpful gesture. GodBrains is a startup that connects psychology students or keen learners of psychology with psychologists, psychiatrists, counselors, etc. It has been started for the awareness of mental health. Their aim is to develop a healthy, happy mental environment by providing workshops, courses, and many more activities. Doordarshan and All India Radio are broadcasting virtual classes and other educational content through their regional channels across the country on TV, radio and YouTube, and helping students with their studies amidst ongoing lockdown. And we cannot forget the return of hit epic serials of Doordarshan. In structures of mud, with roofs of tin and Schools around the world have closed their doors because of the coronavirus pandemic. While it's a great inconvenience for many, it has created a spike in demand for online learning. Educational institutions are introducing online courses, and some education technology startups are temporarily offering free classes to help offset the impact of school closures. Compare it with your own house. Compare it with the houses that we can see at the back of the picture, background.
हमने अपनी जितनी कंप्यूटर फैकल्टी थी, जितने हमारे टीचर्स टेक्नो सेवी थे, उनसे डिस्कशंस किए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करके ऑनलाइन कोर्सेज टीचर्स के लिए रिक्वेस्ट किए विदाउट एनी चार्जेस, और अपने टीचर्स की रातों रात हमने ट्रेनिंग्स कराई, और हमारे टीचर्स ने भी इस बदलाव को बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। उन्होंने भी जिस तरह से पीपीटीज़ बनाई, वीडियोस बनाए, इंटरैक्टिव सेशन डिवाइस किए, डिफरेंट टूल्स को समझा, और एक बार में नहीं, बार बार जितना वो करते गए उतनी उनकी समझ बढ़ती गई। बीच में बच्चों की शैतानियाँ, उनका इंटरेक्शन, सो खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव। आज हम सभी अगर स्कूल जाते तो हम बच्चे एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के साथ बैठते, खेलते, तो अब हमें और कोरोना वायरस का उसमें बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है या फैलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब हम अपने घर में सुरक्षित हैं और पढ़ पा रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस की वजह से हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे म्यूज़िक और योग। Online education has its limitations in India, and so we are very lucky to have a platform like DD Free Dish, which is a free-to-air DTH platform, which reaches 35 to 40 million households. So students across India, through both Doordarshan and All India Radio, can access the lessons, the curriculum, and several states have already started that in partnership with us, and that's playing a very crucial role at keeping students not just at home, but also very productively engaged. How well are we prepared to deal with the situation? As school teachers, administrators, principals, parents, everybody has a role to play in making the children ready for tomorrow. Children, to understand why are they not going to school, they are very smart, they've understood it. They have become so careful that they don't even come down from their houses to play, but they're missing their friends, they're missing their school. And if we bring them together, so virtual world is a solution, and that is what most of the schools adopted. The schools came to children in the form of bringing their friends together, in the form of teachers even dealing with the curriculum. But before the session ended, many schools started the online classes. And in fact, that has bridged the gap between school and home, because community has to come together. And as citizens of this country and as citizens of this world, we have to now reinvent the way we live. Amid the lockdown that has resulted in a halt of production of shows and movies, Doordarshan brought back mythology series Ramayana and Mahabharata, as well as other popular shows such as Shaktiman and Bunyad. Most of these shows were produced when DD monopolized TV broadcasting in the country. जो डीडी नेशनल ने एक नई युग की शुरुआत की है, उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। लॉकडाउन में सुबह शाम 2 टाइम उन्होंने महाभारत और रामायण को जो चलाया है और करोड़ों लोगों के दिलों में जो है दोबारा से उसको बसाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। Not only this, the news section of the channel is continuously running many shows connected to kids, COVID-19 awareness like Doctors Speak, etc. In India, to prevent this, when the Prime Minister announced the nationwide lockdown, he made a very important point when he invoked the metaphor of a Lakshman Rekha. And he told people that, think of this proverbial Lakshman Rekha outside your house, and you stay at home, you stay safe, you cross it, you're putting yourself and your family in danger. I think people very quickly related to that metaphor. And so when we brought back, the iconic shows like Ramayana, people were instantly able to make the connection. And hence you can see these reflected in the TV ratings and the audience numbers, which have been the highest, not just for Doordarshan, but for the entire industry since the time BARC started measuring TV audiences in 2015. So it's a record of sorts for the entire industry. And I think we are very thankful that we were able to play our part in keeping people home and safe.
Reading books is a habit of highest standard. It expands your intellectual ability and multiplies your wisdom. The more you read, the more your perception gets clearer and the more you gain knowledge. People are using this golden period and investing their time in reading good books. But Shamu was a miser. He sold all his farmland and brought gold. During this frightening crisis, it is essential to spend some time worshipping and praying to God. A few minutes of prayers and holy contemplation can kill your day-long stress and convey peace to everyone's mind. In the evening, people gather, all family members, and pray together to God Almighty. The COVID-19 outbreak has been sweeping changes across the art world as galleries have been forced to close their doors to visitors and the cultural calendar of exhibitions and talks has dissipated. But artists have been swift to adapt to the situation, finding new ways to share work with their audiences. Shubha Salina, a painter, artist, teacher, is turning these mundane bamboo stools into pieces of beauty and her artwork while in the lockdown. She has also created some beautiful bamboo coasters with similar art style just before working on this that garnered rave reviews. इसी चीज को ट्राई कर रही हूँ। अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ प्लान्ड एक्शंस लेने हैं। ये प्लान्ड एक्शंस क्या हो सकते हैं? तो पिछले 1 महीने में हम साइकोलॉजिस्ट के सामने ये बात क्लियरली आ गई है कि जिन लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को आर्ट यानी कला से जोड़ दिया है वो आज ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री हैं। कौन सी कलाएं? ड्राइंग, पेंटिंग, डूडलिंग, कुकिंग या बेकिंग, सिंगिंग या डांसिंग, इवन स्टोरी टेलिंग या रोल प्लेइंग। Whipped Dalgona coffee tutorial by Veggie Wonder. In these challenging times, when a challenge to make Dalgona coffee came her way, this Instagram influencer took it with aplomb. Presenting her special whipped Dalgona coffee, which took more than 45 minutes to come to this perfection. Within the confines of your home, you should try this too and drink it up as a reward of all your efforts. टूट जाए तो झूठी, तुम्हारी पहचान बदलती है, बदलती लकीरों के साथ, मगर फिर भी उम्मीद तुम पे ये दुनिया कायम है। Well, Artist Adda, community of performing artists from the field of music, poetry, storytelling, is continuing with their monthly Addebazi in a virtual mode now. अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साथ। आप जब हम हो जाते हैं तो प्रेम प्रेम होता है, वरना सिर्फ कुचल शेम होता है। ये समझा हूँ मैं, तो आंखों से दिल तक नम हूँ। अब मैं नहीं रहा, मैं हम। Thanks to technology, they are still connected and mostly in sync. Check it for yourself. सावन भी तो जाए मन मेरा। पूरे चांद की रात में ज्वार आने तक खड़ी रहूंगी, लहरों पर तैर जाऊंगी, चांद का चेहरा चूम आऊंगी। प्रेम में अनछुए रह गए पलों को छू के देखूंगी, जो आवाज मेरे भीतर उतरती है उसे पी जाऊंगी। फिर शाम से लेकर सुबह तलक यूं कौन फिरे है आवारा। Humanity is going through unprecedented times. The coronavirus lockdown and the news along with the uncertainty and ambiguity can impact on one's mental state.
but following a simple timetable routine can help you stay positive. So stay home, stay safe and stay positive. महामारी है कोरोना, कुछ भी न तुम करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। महामारी है कोरोना, कुछ भी न तुम करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। महामारी है कोरोना। कुछ दिन की बात है प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम भी ना तुम तोड़ो, सरकार के हैं जो सारे। कुछ दिन की बात